हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। और इसमें हम आज बात करेंगे डिफरेंट ज्योमेट्रिक बेसिक शेप्स की, बेसिक वर्ड्स की, उनकी डेफिनेशंस, वो क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ और ढेर सारी प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज। चलिए आज हम क्या कवर करेंगे। वी विल कवर पॉइंट, लाइन्स एंड लाइन सेगमेंट्स, रेज, कर्व्स, पॉलीगॉन्स, एंगल्स। तो चलिए इसी के साथ ही हम आज शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। और इसके पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे न्यू वीडियोस जानने के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद पॉइंट। एन एग्जैक्ट लोकेशन इन एनी स्पेस। कोई भी जगह पे एक एग्जैक्ट लोकेशन इज अ पॉइंट लाइक दिस एंड इट इज़ मार्क्ड विद अ डॉट। आप देख सकते हो यहाँ पे ये डॉट से मार्क्ड है। और इसको नेम कैसे दिया जाता है? इट इज डिनोटेड विद अ कैपिटल लेटर। नेम्ड और डिनोटेड विद अ कैपिटल लेटर। सो इट कैन बी एनीवेयर, कहीं भी हो सकते हैं, आप जैसे देख सकते हो। तो इट कैन बी एनीवेयर इन द स्पेस। देयर आर एंडलेस नंबर ऑफ डॉट्स इन अ गिवन स्पेस। आपको ये सपोज ये एक शीट है, आपको इस शीट में आपके हर पॉइंट आप जितना मिनिमम से मिनिमम कर सकते हो, एवरी पॉइंट इज फुल ऑफ डॉट्स। ओके, दे आर एंडलेस, दे आर ह्यूज नंबर ऑफ डॉट्स दैट यू कैन नॉट काउंट। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ ज्योमेट्री स्पेस या वर्ल्ड। और ये पॉइंट क्या है? पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्री स्पेस, शेप और ज्योमेट्री थिंग दैट should be. Okay, so now let us learn about line segments and lines. So what is lines? Any imaginary path between any two given point is called line. Suppose we have these 2 points and there is an imaginary path that joins these both. So there is only one imaginary path can be जो कि 2 point given points को एक साथ जोड़ सके. Okay? So imaginary path between any 2 given point is a line. And that line is endless. And that is, it can be extended on both the sides. इसलिए हम दोनों साइड ऐसे एरो लगाते हैं। लाइन जब बनाते हैं तो वी पुट 2 एरोज ऑन बोथ द साइड्स और हमारा गिवन पॉइंट तो यहाँ होता है। ठीक है, इट मीन्स लाइन कैन बी एंडलेस। और कोई 2 गिवन पॉइंट है तो देयर इज ओनली वन लाइन दैट कैन गो अक्रॉस दीज बोथ पॉइंट्स टुगेदर। ओके, सो दैट इज द लाइन and it is labeled as, you can write it as AP or PA, and you will use this arrow, both side arrow sign at their head. ऐसे आप लिखोगे। AP लिखने के बाद you will do these 2 marks over the line like this. तो ये आपका हो गया line. ओके, या फिर अगर यहाँ पे आपने लिखा होता ये N ऐसे, तो it will be like line N. All a line contain infinite number of point on it. अभी बताया था एक तो पेज में तो ऐसे ही बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट है, एक छोटी सी लाइन में भी इट इज़ लाइक कनेक्टिंग सो मेनी डिफरेंट पॉइंट्स आर बीइंग कनेक्टेड टू मेक दिस लाइन. लाइन, यू कैन से लाइन इज मेड अप ऑफ डॉट्स और मेड अप ऑफ पॉइंट्स. ओके, तो नाउ अंडरस्टैंड द लाइन सेगमेंट. लाइन समझ आया कि इनफाइनाइट होती है, 2 पॉइंट्स के बीच में एक ही लाइन जा सकती है, 1 पॉइंट के थ्रू न्यूमरस लाइन्स जा सकती है, एंडलेस. और पॉइंट में एंडलेस डॉट्स होते हैं, लाइन्स में एंडलेस डॉट्स होते हैं. लाइन सेगमेंट, द डिस्टेंस ऑफ लाइन बिटवीन एनी 2 गिवन पॉइंट इज अ लाइन सेगमेंट. सो अगेन वी हैव दीज 2 पॉइंट्स एंड द डेफिनिट डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, लाइक जो यहीं पे एंड हो जाए, दिस डिस्टेंस, दिस लाइन दैट इज कवरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज द लाइन सेगमेंट. It is a part of indefinite line, but line segment can be measured. Okay, in line cannot be measured, but a line segment of that is the distance between any 2 given point of a line is line segment, and that can be measured. So it is labeled as AP, and only one this header, we do not put any arrow on it. AP अगर लाइन बता रहे थे तो वी पुट 2 एरोज, और AP लाइन सेगमेंट है, इसका डिफरेंट आप कैसे कर दिए? यू जस्ट पुट अ लाइन ऑन इट. क्लियर? Those end points are the P and A are the end points of a line segment. Now let us learn about rays.
अब इसका एग्जांपल आप ये देख सकते हो, हम लोग सूरज हमारे होते हैं तो वी हैव सो मेनी सन रेज, क्या स्टार्टिंग फ्रॉम सन गोइंग टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन लाइक दिस, तो ऐसे जा रहा है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड गोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. So lines having one starting point and no end point is ray. Okay, समझ आया? Line having one starting point but no end point is a ray. It is denoted like this. हम कोई भी एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे दे देते हैं थोड़ी डिस्टेंस पे, तो वो हमारा एक रे को लेबल करने का इजी वे हो जाता है. ठीक है. It travels in only one direction, तो it can be labeled as PS. और इस बार क्या किया, P के साइड में हमने एरो नहीं दिया, we just put an arrow on S side. जैसे यहाँ पे S, अगर यहाँ पे, इसलिए इसको हम SP करके नहीं एरो दे सकते बिकॉज इसका डायरेक्शन गलत हो जाएगा, तो इसमें ऐसे इसको लेबल नहीं कर सकते हैं. ठीक है, समझ आ गया. चलिए अब जानते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में. सपोज देयर आर टू लाइंस P and L and that is intersecting having a common point O. If two lines have one common point O, they are intersecting lines. Here it is P, it is M, and intersecting at one point, that point is denoted as O. Point at which they are intersecting is the called intersecting points. Clear? अब आती है parallel lines. We have suppose two sets of lines like this, AB and DC. So if two lines have no common points in them, then they are parallel lines. कोई दो ऐसी लाइन जिनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो वो क्या है, पैरेलल लाइन्स है. Here line AB and CD are parallel to each other. जिससे देख सकते हो आप कोई भी इसमें कॉमन पॉइंट नहीं है. आप कैसे लिखोगे, AB हेडर इक्वल टू, मतलब पैरेलल टू CD, और यू कैन राइट DC. ओके. कर्व्स, अब हम जानते हैं कर्व्स के बारे में. लाइंस के बारे में बहुत पढ़ लिए. अब कर्व्स क्या होते हैं, एनी ड्राइंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड कर्व. आप कुछ भी जो ड्रॉ करते हैं, सपोज this everything is a curve. आप ये भी ड्रॉ करते हो जिसमें आप कहो कि यहाँ तुमने ऐसे घुमाया नहीं, स्ट्रेट लाइन है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन ज्योमेट्री अ कर्व. ओके. इट कैन बी सेड एज अ ड्राइंग डन बाय पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग इट वंस. क्या है, कोई ऐसी ड्राइंग जो कि हम बिना पेन लिफ्ट किए, पेन हटाए हम ड्रॉ किए, ऐसे ऐसे कर दिए, ये कर दिए, ये कर दिए, तो ये हमारा एक कर्व हो गया जिसमें हमने पेन अपनी लिफ्ट नहीं की. क्लियर, समझ आया. चलिए अब इसके टाइप्स देखते हैं. इसके ना 4 टाइप्स होते हैं. एक सेट होता है सिंपल एंड नॉन सिंपल कर्व्स का. सो दीज आर द सिंपल एंड दीज आर नॉन सिंपल कर्व्स. एनी कर्व और पाथ दैट डू नॉट ओवरलैप और इंटरसेक्ट itself is the simple curve, like this. This just got this, we just got a heart like this. तो ये आपको ना ओवरलैप किया ना ही इंटरसेक्ट किया, so this is a simple path. And any path that intersect or overlap each other like these, they are the non-simple path curves. Okay, clear है. Open and closed curves, these are open and the downwards are the closed curves. Open curves, any curve which there are end points. This is the end point here. कोई भी ऐसा कर्व जिसके end points होते हैं, that is open curve. Okay. And the curves that do not have any end points, that have no end points, is the closed curves. जो shape आपका close हो गया, you can see. इसमें आप यहाँ से यहाँ गए, it is closed here. So अब कहाँ से शुरू कहाँ खत्म आपको, you don't know any end point. So that is closed. Okay. And now polygons. A closed curve made of line segment. Like these curves. These are the closed curves. These are made up of line segments. And this is the polygon. Okay. Depending upon the number of lines or sides, there are various types of polygons. Like we have triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon. जैसे जैसे हमारी साइड्स बढ़ रही हैं, आप देख सकते हो कैसे कैसे हमारे शेप्स भी बढ़ते जा रहे हैं और उनके नाम अलग अलग हैं. ओके. ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन नोन. ओके. द मिनिमम साइड इज 3 लाइन सेगमेंट से जो बना है वो है हमारा ट्राइंगल. साइड्स, तो साइड्स मतलब
Line segments forming the pentagon are its sides. Quadrilateral has 4 sides, triangle has 3 sides. आप ये देख सकते हो. We have ये different line segments से बने 1, 2, 3 और 4 line segments से. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 line segments. So we have different line segments and each line segment is the side of that polygon. Now vertex, a point where two sides of a polygon meet. जहाँ पे दोनों side के suppose this and this are meeting here, so that is the vertex. Every polygon has at least 3 or more than 3 vertex. Okay, and if there are more than 3, then they are known as vertices. Okay, so now adjacent sides, any two sides of a polygon with a common endpoint. ये दोनों sides having a common endpoint, it is adjacent sides. Here these two have a common endpoint, so these and this is the adjacent sides. Adjacent vertices, endpoints on the same side of the polygon. Here this and this are the endpoints on the same side of the polygon, so these are the adjacent vertices. Diagonals, the lines that join the non-adjacent vertices of a polygon. Suppose this and this. These are the two diagonals of a quadrilateral that join the non-adjacent sides like this. These are the non-adjacent sides. So pentagon में we got 1, 2, 3, 4 diagonals. और quadrilateral we got 2 diagonals here as you can see. तो कोई ऐसी लाइन जो दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करे वो होती है डायगोनल. समझ आया? आई होप आपको क्लियर है. चलिए अब हम आते हैं एंगल पे. So angle is made by two rays. You can see having one common endpoint, one common starting point. There are two rays going from one starting point, that is forming an angle. An angle is formed by two rays. Angle is made up of two rays having one starting common point. These are the two rays. These are the arms of angle. ये आपका क्या है? These are the arms of the angle. And that one common point is the vertex. While naming an angle, the vertex of an angle has to be in the middle. Okay, जैसे कि ये अगर हमको उसको हमारा ये name होता AOB, vertex is named as O, these arms are named as A and B. So our angle will be named as angle AOB or angle BOA. और अगर ये भी हमारा named होता है, this angular length is also named as 1, so it is also known as angle 1. Clear है? अब इसमें भी इंटीरियर और एक्सटीरियर होते हैं, like R and F. Any point that is R and F, यहाँ क्या दिख रहा है? दोनों एंगल के, दोनों रेज के बीच में. तो these are interior to the angle, और point X, P, T are exterior. Okay? अब चलते हैं, हम बात करते हैं ट्राइंगल की. Triangle, any shape, the polygon which is made up of 3 line segments, they are having 3 sides, is a triangle. So triangle can be written as like this. We make a small triangle icon and write the name ABC, or make the small triangle icon, you can write the name CBA. You can just go ahead and join them. समझ आया कैसे कर सकते हो? नेम ऑफ अ ट्राइंगल. साइड्स क्या क्या है हमारी यहाँ पे? AB, BC, CA. Vertices A, B and C. Clear? So now the exterior, interior and boundary. You can see the point T is on the boundary of the line triangle. Then XY is the interior and Z is the exterior part. Clear है? Interior, exterior भी. Quadrilateral, the polygon made up of how many line segments? 4 line segments. और having 4 sides. इसकी अब sides को रीडिंग करने की कोशिश कीजिए.
पहले एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी हैं, ए बी एंड बी सी, और ए बी एंड ए डी, डी ए और डी सी. So that is having one common point. These all are the adjacent sides. Clear है. Opposite sides AD or BC. These are the opposite sides. Opposite angles, angle A, angle C. Adjacent angles, angle A, angle B. Diagonals AC and BD. Sides तो आप गिन ही सकते हो, AB, AD, BC, CD. Clear? Circle. Circle is the one of the only closed figure which is we learn about, लेकिन वो आपका polygon नहीं है. ठीक है. It is a closed figure formed by a set of points. We have like this set of points on a plane located at the same distance. You can see it is located at the same distance from the center. Each point is located. The set of point is located at the same distance from a fixed point in the center is the forming a closed figure called circle. This way. Okay. तो अब इनके भी कुछ terms जान लेते हैं. Radius. The fixed distance at which a point are located from center. The fixed distance at which each of the point is located from the center is called radius. Diameter. The length of a line segment which joins any two points on the circle. ये point और ये point join करना है. Suppose these two points को join करने वाली line that goes through the center. Center we can say it a line segment that joins center and the two points on the circle. Any two points on the circle together, like line passing through these given 3 points on a circle is called diameter. Okay. Diameter is always double of the radius. And diameter divides the circle into two halves called semicircles. और अब बात करते हैं और भी हमारे सर्कल के पार्ट्स की. So chord. So any line segment that join two parts. Diameter क्या था? The line segment that join 3 parts. Center to the 2 points on the circle boundary is the diameter. Chord क्या है? The line segment that joins any two given parts of the circle. The given 2 points of the circle is chord. So it can be equal to diameter, but many times it can be smaller than diameter also. Arc, the part or segment of the circumference, the boundary of the circle. ये circle की जो arc क्या है? ये इसकी boundary का एक part. Circle की boundary का कोई भी एक part is the arc. This can also be an arc. And now the segment, a region in the interior of the circle enclosed by arc and a chord. The region enclosed by an arc and the chord. Is this the segment? Okay. Sector, the region or the interior of the circle which is enclosed by two radii and one arc. The region between the arc and a chord is segment, and the region between two radii and an arc is the sector. Clear है? तो चलिए अब हम इसी के साथ करते हैं कुछ exercise. We are having this figure here and we have to name 5 points. We can simply name these points as D, E, C, O, B. Line, name a line. Yes, you can write DB with an arrowhead. 4 rays, O to D, O to B, O to E, O to C. You got like this. 5 line segments, DB, EB, BO, EO, EB and OC. And what we will do, we will just put a bar on head. Now we have this given figure. Name this line in possible 12 ways. Okay, choosing any 2 letters in the time. जो ये 4 numbers ये 4 letters उसके थ्रू आप इनको ऐसे नेम कर सकते हो. You will write AB, you can also write BA, you will write BC, you can write CD, CD, BC, BD, BB, AD, DA and CA, AC.
You got how many numbers, how many types? You got 12 name of the same line. Clear है कैसे किया? So use the figure to name the line point containing point E. अब हमें ये given figure है, अब इसमें हमें point E को कैसे line join करें, कौन सी line इसको point E को contain कर रही है? It is AE. Line passing through AE. Line on which O lies, CO. Two pair of line intersecting lines, two pairs of intersecting lines. इंटरसेक्टिंग लाइन्स आपकी CO और AE हो सकती है, FE और AE भी हो सकती है. क्लियर? दोनों ही हमारी. तो फिर हाउ मेनी लाइन्स कैन बी पास थ्रू वन गिवन पॉइंट? वन गिवन पॉइंट endless or infinite lines can pass. Two given points, only one. Draw a rough figure and label the suitably in each of the following case. हमें एक लेबल बन ड्राइंग करनी है जिसमें हमें point P lies on the line segment AB. We have a line segment AB और उसमें हमने एक point note कर दिया P. It can be anywhere. Line XY and PQ intersect at M. We got XY, we got PQ. And intersecting point is named as M. Clear है कैसे कर रहे हो आप ये सब? Line I, L containing E and F but not D. E and F and D is on the exterior. OP and OQ meet at O. Similar. So we have a closed curve. Is it a curve? Yes. It is a closed? Yes. Name the angle in the given figure. The angles are DAB, ADC, BCD, CDA. So this way we got cover our first chapter of geometry and the fourth chapter of maths of class 6. आई होप आपको एक अच्छा समझ आया होगा, क्लियर होगा. तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और हमें सब्सक्राइब